So class, today's topic is how to make your website or web page live on GitHub. Okay, so first of all, let me introduce what actually the Git and GitHub is. Okay, so let me take to you my slide. So Git is basically a version control system tool that is used by developer, and it has been installed on locally on their desktop or laptop. Okay, basically there is a confusion between Git and GitHub. So Git is basically a tool, and GitHub is a cloud-based hosting platform where the developers can host their code, and it is built around the Git tool. Okay, now first of all, let me explain version control system, because Git is a version control system. So version control system means we have to manage all the documents, the programs, the website, and other information collectively with a single control system. It means suppose at first day I have created a index.html. On the second day I have created about.html, and on the third day I have do some changes in the about.html. See, so I have done three different tasks. So the version control system has a responsibility to take a snapshot of every day. Okay, snapshot means it will store the code of whatever you do in your the project. So at first day you created your index.html, so whatever the code you have used, it will store, and another day you will it will another created another version of the same project, and it will store. Similarly, after converting from day one to that day last, you have gone through several days. So the version control system keep tracks of each version of the project you have completed. So basically, previously it was not collaboration, but now we have to work in a collaboration environment. Okay, where the each person do their task and they store their code centralized. So it means we are combining our tasks centrally at one place. Okay, now there are different versions of the software. So versions means snapshots of all the data stored in your computer. Okay, so it means there are every time when you work on your project, a copy of the same project will be stored, okay, with the updated data. Okay, so that is called versions, or sometimes called Git repositories. Okay, and we should also keep remember that the version control, the version name should be in a correct way. Okay, now what the benefit of these things? The first benefit is we can take the backup of each copy. Now, what is the reason why we make versions? See, suppose you have done a small part, and uh, and the next day you want to do some next part. So if the second part you have right and your code is not correct, and you want to go back to the previous part, so because we have a copy of the previous version, so you can use that copy of the version again. It means every time you do a part, so that the snapshot, a copy of that part will be stored, so you will get all the version of your project whatever you are doing on your task. Okay, now the third thing, we can analyze the entire project. See, version control system provides you a valid product, valid proper documentation, and also uh, manage how and when you exactly do the changes, what exactly the changes you have done in your project. So it keeps track of every information when you are working on your project. Okay, now what are the different features that are get provided? First, the task is distributed amongst the team. The Git is compatible with every platform. It's non-linear, means you can work on a different platform, and finally you can merge the project. Branching is also possible, means now the person can work on a single module, and then we can merge all the branches. It's a lightweight, it's speed, it's an open source, it is reliable and secure, and finally it is very much economical. So these are the some of the features of the Git provided. Now, what is a Git? Git is a version control system. What is meaning by version control system? Means we are now working in a distributed environment, in a non-linear workflow, by providing different data assurance for developing quality software. See,
I'm on one system, and I can work on a one part. And once my part is completed, I can commit my changes and store our project centrally. Similarly, there are a number of people can work on a same project, and they can centralize, they can store their tasks, they store their code centralized. This is a distributed environment. We can divide the task into the multiple form. Now, I'm giving you a simple diagram with the help of which how you can find where the Git and where the GitHub will place. See, when you are working on your system, so it means you are locally use a Git, and see, whenever you do changes, the Git will track every change you do. Now, once your task is completed, you will use a commit command and you will put the data to stored centrally as GitHub, because GitHub is an online cloud hosting service where the data is stored centralized, okay, online. And see, when you do some changes, it will be stored in your local repository, and when your data is done, it will be stored at the centralized repository. So we have two different kind of repository. One is local, in which you do all the changes. Once your changes are completed, you can put into a centralized repository. Okay, so typically the local repository typically stored on your machine, and it is having a .git folder in your project root. Once, and only the admin of the machine can work with this repo. No one other can work. See, every person have their own local repository, and once their task is completed, they can put it to a centralized repository, typically located on this remote server, exclusively consists of .git repository folders. There are again a single repository folder, and mean to share their and exchange their code. So that is main purpose is to for sharing their code. So we can also use GitHub for a place where you can make your code public, and that can be shared by any other person. Okay, now how this Git work? So basically, there are some operations and there are some commands that will be used in Git and GitHub. So I'm not discussing in detail, because here today we are using Git GUI way in order to make your website or web page live. Okay, so you can go through these commands after the class. Basically, I told you that there are two repository. One is called local and one is called remote. There are different Git commands that are basically used to store your data locally, and then from locally to store your data on remote repository. Now I'll tell you how this works. So Git and GitHub being used by every big company. Even Netflix use GitHub, Amazon use GitHub, Airbnb, Google, and IBM. So because it is a free and open source distributed version. So now there are some steps we have to follow in order to make your website live. The first step, you should have a VS Code editor, because I'm using VS Code editor to integrate my project with the GitHub repository. So first of all, you should have Visual Code Editor. Now, after the Visual Code Editor, you should download the Git SCM. So Git SCM is basically you can say that a setup exe file which helps you to store the Git bash on your computer. So you can either use Mac OS or Windows or Linux in order to use the Git. Okay. Now the next thing, you should also have a valid account on GitHub. So I hope everyone should have a account on the GitHub, because in order to use GitHub, you should first create an account. Now, the next thing, you should configure your Git bash using your credentials. So how you can configure it? So first of all, you have to open Git bash on your system. Now, once your Git bash is open, you have to configure your Git with your local system. How you can configure? You have to use a command git config hyphen global. Okay, global. And now after that, you have to provide the username. So this is a username you can provide. You can generally, I prefer to use the username whatever you use on your GitHub. So the username you should provide. Once you provide the username here, so after that you can use the second command, and the second command is user.email.
Now here you have to provide the email ID as well, through which the Git will know, okay, this is the user who added some updated the data, because this information is being logged on your system. Okay, when the next data will be committed, who committed the data, so that is given by this configuration. Now the next thing, अगला काम क्या है, आपको एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी है गिटहब के ऊपर. सो लेट्स गो ऑन गिटहब, और गिटहब के ऊपर हम एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे यूजिंग द दिस न्यू बटन. और यहाँ पर आप अपनी रिपोजिटरी का नाम लिख सकते हैं, लाइक आई एम राइटिंग फुल स्टैक प्रैक्टिकल 2021, क्योंकि हम गिटहब का यूज करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकल को स्टोर करने के लिए. यू कैन डिफाइन द डिस्क्रिप्शन, रेपो फॉर फुल स्टैक practicals. Okay, full stack practicals. Okay, now next thing, you should make your repository public. Okay, or you can make it private also. Okay, now next thing, you have to click on the create repository button. Now see, once your repository have been constructed, आपको क्या करना है, ये जो URL है, आपके रेपो का URL है, उसको आपने कॉपी करना है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू ओपन VS कोड एडिटर. हम VS कोड एडिटर को ओपन कर लेते हैं. नाउ यू हैव टू गो इनटू द व्यू मेन्यू, और व्यू मेन्यू के अंदर हमारे पास एक कमांड पैलेट नाम का एक मेन्यू होता है, उस पर आपको क्लिक करना है. नाउ हियर यू हैव टू फाइंड गिट क्लोन कमांड. ओके, सी गिट क्लोन आपकी कमांड तभी आएगी जब यू हैव प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड SCM. अगर आपने SCM को इंस्टॉल किया होगा एंड यू कॉन्फ़िगर योर सिस्टम विद योर गिट, so git clone command will be there in your visual code editor. Okay, now I'm clicking on this git command. Now we have to provide the URL of your repository. तो हमने वहां से जो URL कॉपी किया था वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे. Okay, now the next thing is you have to press enter. जब आप enter प्रेस करते हैं तो सिस्टम आपसे पूछता है कहाँ पर आप अपनी रेपो को स्टोर करना चाहते हो. तो आई एम सेइंग मैं अपनी रेपो को डेस्कटॉप पे क्रिएट करना चाहता हूँ. तो इट विल क्रिएट अ लोकल रिपोजिटरी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्लोन कमांड कर रहे हैं. तो whenever I click on the select repository location, so it will create the local create a repo on your desktop screen. Let me find on desktop screen. जब मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको देखो फुल स्टैक प्रैक्टिकल 2021 मिल जाएगा. ठीक है. ओके, सो इट मीन्स दिस इज योर लोकल रिपोजिटरी. ये आपकी क्या होगी, लोकल रिपोजिटरी होगी. और जो आपने गिटहब पे बनाया है, इट इज योर सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू ओपन दैट रिपोजिटरी इनटू योर VS कोड एडिटर. तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ. ओके, नाउ सी द सेम रिपोजिटरी विल बी ओपन हियर, full stack practical 2021. So I'll click on this. Now the first thing is you have to create your file. So I'm creating the file, that index.html. Now why I'm writing index.html, because this is the first file your server looking for as a home page. तो आपका सर्वर होता है वो इसको होम पेज के लिए ढूंढता है. This is the first file that will be open in your when you make your website live. So I've created index.html. Now the next thing is I'm going to create the skeleton. मैं यहाँ पर skeleton create कर लेता हूँ. And in the title I'm saying my website. Okay, now the next thing, I'm going into the body section and create a simple heading. This is my website. Okay, now I'm saving the code. इसको मैंने सेव कर लिया. Now before uploading this web application to your GitHub repository, हम एक बार इसको अपने live server में local machine पे check कर सकते हैं कि is it working fine or not. So I'm just open this with live server. ठीक है. So see, this is my website and see the address is local machine. ये हमारी local machine का address. Okay, see, this is the local machine address. Now the next thing is we have to upload this repository onto your
गिटहब। कैसे करेंगे? जब आप यहाँ पर लेफ्ट में देखेंगे, यहाँ पर एक आपको सोर्स कंट्रोल दिखता है वीएस कोड के ऊपर, एंड यहाँ पर 1 लिखा आ रहा है। इट मींस देयर आर सम चेंजेस इन योर प्रोजेक्ट। आपने इस अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। 1 का मतलब है आपने सिर्फ एक ही चेंज किया है। कौन सा चेंज किया? जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपने index.html पेजेस के अंदर या पेज को क्रिएट किया है या उसके अंदर आपने चेंजेस किए। तो नाउ यू हैव टू अपलोड दिस फाइल ऑन टू योर रिपोजिटरी। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आपको कोई ना कोई मैसेज देना पड़ेगा। सो आई एम गिविंग दैट दिस इज माई वेबसाइट। आगे कोई भी मैसेज दे सकते हो, या यू कैन राइट दिस इज माई फर्स्ट कमिट। यूजुअली हम फर्स्ट कमिट लिखते हैं। ओके, ये फर्स्ट कमिट मीन्स फर्स्ट चेंजेस दैट आई एम गोइंग टू पुश ऑन टू द repository. The next thing is you have to click on this tick button. This is called commit button. Okay, commit means I have done my task and I am finalized with my project. So you click on the commit button. तो जब भी आप कमिट करेंगे, नाउ सी जो भी हमारा सोर्स कंट्रोल के अंदर चेंज था वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं कमिट। फाइनल लोकल रिपोजिटरी के अंदर स्टोर हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू पुश दिस लोकल रिपोजिटरी टू योर गिटहब। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हमारे पास एक कमांड होती है, दैट कमांड इज कॉल्ड पुश कमांड। हम इस पुश कमांड की हेल्प से डेटा को अपने लोकल से हमारे जो सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है वहां पर हम स्टोर कर सकते हैं। बट जब भी आप पुश कमांड करोगे, क्लिक करोगे, तो आपके पास एक फर्स्ट टाइम जब करोगे सो इट विल आस्क द क्रेडेंशियल ऑफ द गिटहब। ओके, एंड इट विल वांट दैट आप वीएस कोड को परमिशन दो ताकि वो गिटहब का यूज करके यहाँ की लोकल रिपोजिटरी को आपके सेंट्रलाइज रिपोजिटरी के अंदर पुश कर सके। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड दिस, तो मेरे पास ये कमांड नहीं आ रही। सो आई एम गोइंग टू पुश इट नाउ। जब मैं इस पे पुश पे क्लिक करूंगा एंड यू कैन सी दैट नीचे यहाँ पर एक सर्कल सा घूमने लग जाएगा। इट इंडिकेट्स दैट वी आर गोइंग टू सिंक्रोनाइज द चेंजेस, कि वीएस कोड आपके चेंजेस को सिंक्रोनाइज कर रहा है विद गिटहब। सो वंस इट स्टॉप इट मींस चेंजेस हैव बीन डन। सो नाउ यू हैव टू गो बैक टू योर गिटहब अकाउंट। तो हम वापस चलते हैं गिटहब के अकाउंट के ऊपर। नाउ यू हैव टू जस्ट प्रेस दिस रिफ्रेश बटन। आपको अपने एप्लीकेशन को, अपने वेब पेज को रिफ्रेश करना है, ओके, यूजिंग दिस बटन। So when I click on this reload button and you will find that जो हमने फाइल बनाया था अपने लोकल रिपोजिटरी के अंदर वो हमारे यहाँ पर जो गिटहब अकाउंट के ऊपर आ चुका है। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट कमेंट एंड 1 minute ago we have uploaded this changes on your GitHub. Now अब क्या हो चुका है? आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो लोकल कंटेंट था या लोकल फाइल था, इट विल बी अपलोडेड ऑन योर गिटहब। नाउ नेक्स्ट थिंग इज आई वांट दिस पेज, द इंडेक्स पेज टू बी लाइव। हमने इस पेज को लाइव करना है। लाइव करने के लिए यू हैव टू गो ऑन टू द सेटिंग्स। मैं सेटिंग्स पे जा रहा हूँ एंड ऑन द सेटिंग यू हैव टू फाइंड द पेजेस। पेजेस को फाइंड किया हमने, क्लिक किया, and on GitHub pages you have to select the source. See, we have multiple branches. एक प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं। तो अब जब हम फाइनल हो जाता है आपका प्रोजेक्ट को, तो हम उस प्रोजेक्ट को मेन मास्टर ब्रांच के ऊपर ले जाते हैं। सो अभी हम कोई ब्रांचिंग यूज नहीं कर रहे, पैरेलल डेवलपमेंट नहीं कर रहे, तो अभी हमारी जो ब्रांच होगी दैट इज अ मास्टर ब्रांच। ओके, नाउ एंड दिस इज ऑल्सो अ रूट फोल्डर। जो हमारा करंट फोल्डर है दैट इज ऑल्सो अ रूट फोल्डर, और आपको यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन द सेव बटन यू विल फाइंड a link, the live link of your website have been generated on your GitHub pages account. यहाँ पर आपका live link generate हो जाएगा। Now you can use this link to see that your website is going to be live. So when I click on this link and see this website is live, and now see the address. This address is not a local address. This is a live website address. You can find that this is https://punkcap.github.io and this is a live. Okay, now it means now your website have been live. ये live हो चुकी है। But still अगर मुझे अपने GitHub अपने वेब प्रोजेक्ट के अंदर, अपनी एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस करनी है, तो हाउ वी कैन डू द चेंजेस इन योर प्रोजेक्ट, and after that I will see that changes will be also reflected on your live website. तो अब कैसे करेंगे? हम वापस चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। नाउ फॉर सम चेंजेस मैं इसके ऊपर कुछ CSS ऐड करने वाला हूँ, एंड आई एम ऑल्सो एडिंग अ JS।
हम इसके ऊपर एक जावास्क्रिप्ट भी ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने रूट डायरेक्टरी पे जाना है। दिस इज योर रूट डायरेक्टरी। यहाँ पर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है एंड यू कैन राइट दिस फोल्डर एज CSS। Okay, now why I'm creating this CSS as a separate folder? क्यों क्या करते हैं हम, सी हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल CSS यूज करते हैं, मल्टीपल जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। सो आई फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन we should create separate folders so that you can store your data into in proper manner. Okay, so मैंने एक CSS का फोल्डर क्रिएट कर लिए और एक मैं JS का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जहां पर मैं अपनी जावास्क्रिप्ट रखूंगा। एंड आई विल आल्सो क्रिएट वन मोर फोल्डर दैट वी कॉल्ड इट एसेट्स। नाउ एसेट्स के अंदर आप अपने पिक्चर्स रखेंगे, इमेज रख सकते हैं, आप साउंड फाइल्स रख सकते हैं, आप वीडियो फाइल्स रख सकते हैं, आप जो भी आपको एक्स्ट्रा डाउनलोड मटेरियल लगाना है आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। ओके, आप इसको डाउनलोड फोल्डर का नाम दे सकें या कुछ भी देना चाहें दे सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग इनटू द CSS फाइल एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अवर फर्स्ट CSS एंड दैट इज एन एक्सटर्नल CSS। अभी के लिए सिर्फ आपको मैं इस एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन को समझाने के लिए कि हाउ वी कैन अटैच द CSS, हाउ वी कैन अटैच द JSS, सिर्फ उस पर्पज से समझा रहा हूँ। वी विल स्टडी दिस CSS एंड JS इन डीप इन द कमिंग क्लासेस। तो यहाँ पर जाके मैं अपनी एक फाइल क्रिएट करता हूँ दैट इज कॉल्ड style.css और इसके अंदर मैं अपनी फर्स्ट CSS लिखता हूँ दैट इज कॉल्ड h1 के ऊपर मुझे अपना CSS अप्लाई करना है एंड आई वांट दैट टेक्स्ट अलाइन टू बी सेंटर कर लेते हैं। कलर मैं उसका कर लेता हूँ रेड एंड द बैकग्राउंड कलर आई एम गिविंग इट टू से दिस व्हीट कलर। ओके, तो मैं इसको सेव करता हूँ and you can find these changes in your, see this is an external file, ये external CSS file है। now this external CSS file you have to link with your index.html so that it will work। तो हम क्या करेंगे, हम अपने head section में जाएंगे and we use the link tag। okay, I will explain these in more detailed manner in the coming classes, so don't worry। okay, so यहाँ पर h reference के अंदर आपको अपनी CSS का एड्रेस पास करना है। see now our CSS is stored in CSS folder, तो आपको इसको प्रॉपरली इसको आपको एड्रेस पास करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी आर एट रूट डायरेक्टरी बट आपका जो CSS है वो CSS फोल्डर के अंदर पड़ा है। तो हियर यू हैव टू जस्ट फर्स्ट राइट डॉट स्लैश मीन्स करंट रूट डायरेक्टरी। करंट रूट डायरेक्टरी के अंदर आपका CSS फोल्डर है और उस CSS फोल्डर के अंदर आपकी style.js फाइल पड़ी है। ओके, so it means now it is properly connected and you can see the changes in your local machine। so local machine में check करने के लिए again I am going to open with live server and you can find that now the website is being styled with the external CSS। ये external CSS से styled हो चुकी है। okay, now let's add the JS part also। मैं इसके अंदर एक JS part भी add करता हूँ। तो उसके लिए हम JS के अंदर चलेंगे। okay, and इस JS के अंदर फिर I'm going to create a file say script.js। okay, now I'm writing a simple code that is called alert and I'm saying this is live website। okay, and see इस JS को भी मैं अपने मेन फाइल है that is index.html उसके साथ लिंक करूंगा। again I'm going into this section head section and I'm using the script tag और script tag के अंदर source के अंदर I have to pass the address of the script। so again because the script is stored in the JS folder and I am on the root directory, so I have to pass the valid address। so I'm again write this, find the JS folder and find the script। see this address we called the relative address, okay, we always deal with the relative address so that it will work perfectly। okay, so it means script add हो चुके हैं। let's find the changes in the local machine। see जब भी मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा सबसे पहले आपका स्क्रिप्ट फायर होगा। दिस इज अ लाइव वेबसाइट। ओके करेंगे एंड यू कैन सी द वेबसाइट ऑल्सो। ओके, इट मीन्स आपका JS भी काम कर रहा है, आपका CSS भी काम कर रहा है। नाउ आई वॉन्ट दीज चेंजेस टू बी रिफ्लेक्टेड इन माई लाइव वेबसाइट। लाइव वेबसाइट में कैसे रिफ्लेक्ट होगी उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, वापस VS कोड पे जाते हैं एंड यू विल फाइंड दैट देयर आर 3 चेंजेस इन योर सोर्स कंट्रोल। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा हमने इंडेक्स के अंदर चेंजेस किए हैं। इंडेक्स के अंदर हमने ये चीज ऐड की है। so it means I have updated our index.html file
स्टाइल के अंदर हमने चेंजेस किए एंड स्क्रिप्ट के अंदर हमने ऐड किए, दो फाइल्स हमने ऐड की हैं। और जब ये दो फाइल्स ऐड होंगी तो मीन्स ये फोल्डर्स के अंदर है, तो इट ऑल्सो क्रिएट द फोल्डर। तो मैं वापस मैसेज में चलता हूँ, सी ऐड न्यू चेंजेस, जो भी आप मैसेज देना चाहते हो वो आप दे सकते हो यहाँ पर। सो दिस मैसेज विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर गिटहब कि आपने क्या किया है, व्हाट आर द चेंजेस यू मेड इनटू योर प्रोजेक्ट। तो जो भी आपको वैलिड मैसेज देना है वो आप दे सकते हो। एंड आई एम क्लिकिंग ऑन दिस कमिट बटन। नाउ सी, ये आपकी लोकल रिपोजिटरी के अंदर अपडेट हो चुकी है। नाउ व्हाट शुड आई डू, आई वांट टू डू इट टू मेक इट live, to make it push into your central repository। उसके लिए क्या करेंगे, हम पुश करेंगे। तो हम यहाँ तो या तो इस पुश बटन के थ्रू हम डेटा को पुश कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज दिस सिंक बटन। आप इस सिंक बटन के ऊपर भी प्रेस कर सकते हैं। so when I click on this sync button and you see it's again starts moving, so it means it's synchronizing our changes into your GitHub repository। okay, now it's being stopped, so it means changes वहां पर अपडेट हो चुकी होंगी। let's go back to our GitHub। हम GitHub पे चलते हैं। let's see, open GitHub and you will find your repository here 2021। okay, see, इसके अंदर एक CSS फोल्डर ऐड हो चुका है और उसके अंदर एक style.css भी आ चुकी है। okay, you can see the changes there। see, हमने ये CSS में ऐड किया था। similarly you can find the JS folder is also there, और उसके अंदर भी हमारे कुछ चेंजेस हो चुकी होंगी, हमारा स्क्रिप्ट आ चुका होगा। ठीक है, एंड आपका इंडेक्स भी, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने ऐड न्यू चेंजेस की थी, जो हमारा सेकंड कमिट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। एंड सी 1 minute ago, so it means now the changes have been uploaded on your central repository। now I want to see whether it has been reflected in my live website or not। so आप क्या करेंगे, वापस अपनी live website पे जाएंगे and you have to just again reload the button and you find that the JS is also working and see the CSS is also working on your live site। okay, so it means the changes have been uploaded and it has been reflected in your website। okay, now the next thing I'm going to tell you, see, अगर अभी आप क्या कर रहे हैं, अपने लोकल रिपोजिटरी पे काम कर रहे हैं, मे बी यू कैन वर्क ऑन योर सेंट्रल रिपोजिटरी एज वेल। सो मैं क्या करता हूँ, अपनी सेंट्रल रिपोजिटरी पे जाता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट अ न्यू फाइल। ओके, एंड आई नेम्ड इट एज माई टास्क डॉट txt। मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ txt के ऊपर, txt फाइल। नाउ आई जस्ट वांट कि हमें क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करने हैं। तो आई एम राइटिंग से आई हैव टू वर्क on navigation। second, I have to work on content and I have to work on form as well। so I have written some task here। see, और क्या करने वाला हूँ मैं, इस फाइल को सेव करने वाला हूँ अपनी सेंट्रलाइज रिपोजिटरी के ऊपर। so I'm here, I'm creating, see, my tasks। okay, commit the file। see, this new file has been generated on your सेंट्रलाइज रिपोजिटरी। अभी हमने ये फाइल कहाँ जनरेट की है, सेंट्रलाइज रिपोजिटरी के ऊपर। नाउ दिस फाइल इज स्टिल नॉट अवेलेबल ऑन योर लोकल। सी, अगर मैं अपने एक्सप्लोरर को यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर सिर्फ एसेट्स हैं, CSS है, JS एंड इंडेक्स डॉट HTML फाइल है। तो आई वांट कि जो हमने सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में जो भी चेंजेस किए हैं, इट शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन योर लोकल रिपोजिटरी एज वेल। सो हम क्या करेंगे, वहां पर तो चेंजेस हो चुके हैं, अब उस चेंजेस को यहाँ पर लेकर आने के लिए वी गो बैक टू द कंट्रोल, और इस कंट्रोल के ऊपर यहाँ पर हमारे पास वी हैव अ पुल कमांड। पुल कमांड विल बेसिकली यूज टू गेट द डेटा फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी टू योर लोकल रिपोजिटरी। तो मैं यहाँ पर पुल कमांड पे क्लिक करने वाला हूँ। व्हेन आई क्लिक ऑन द पुल कमांड, इट्स अगेन गोइंग टू द सिंक मोड, वो सिंक मोड में चला जाएगा एंड इमीडिएटली योर फाइल फ्रॉम योर सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी हैज बीन डाउनलोडेड टू योर लोकल रिपोजिटरी एज वेल। सी, यहाँ पर माई टास्क डॉट txt आ चुका है। जब आप इसको देखोगे एंड यू कैन सी द सेम the task we have mentioned over there in the centralized repository also being reflected on your local repository as well। so you can also use pull command for getting the data back from the centralized repository, and you can use the push command to upload the data from your local repository to your centralized repository। okay, so here we have completed our
task that how we can make our website live using Git and GitHub.